Bacho, how are you doing? I hope you all are fine. So let's start the new topic, major domains of the earth. And we have learning pod. In that we have lithosphere, atmosphere, global warming, hydrosphere, biosphere, measures of environment protection. ये सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Are you people excited? So let's start. The earth is a unique planet having water and air which support life. ये तो आप जानते हैं क्योंकि सिर्फ अर्थ पर ही जीवन संभव है, क्योंकि वहाँ हवा है, पानी है, इसके बिना हमारी लाइफ संभव नहीं है, तो इसलिए अर्थ पर जीवन संभव है. In fact, land, water and air are the three major domains of the earth where all life forms exist. The domain of life, that is biosphere, though a very narrow zone, is the most important zone of the earth. Lithosphere is the domain of land on the earth, and it forms the upper solid layer of the earth consisting of rocks. This layer called the crust is about 100 km thick, and it is broken into 20 or so huge slabs called tectonic plates. Underline कर लीजिए प्लीज़, ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन जो है आपको हेल्प करेगी आपको आंसर करने में क्वेश्चंस के. Now let's read about some more information about this. The land comprises nearly 29% of the Earth's area. It is unevenly distributed. Most of the land is concentrated in the northern hemisphere, which is called the land hemisphere. The southern hemisphere, on the other hand, has a predominance of water. It is therefore called the water hemisphere. Photographs of the earth taken from the space present the distribution of land and water. जो हम स्पेस से फोटोज खींचते हैं ना हमारी धरती की बेटा, उससे हमें पता चलता है कि कितना धरती पर पानी है और कितनी लैंड है. Continents, huge land masses surrounded by oceans, are called continents. There are 7 continents in the world जो आप जानते हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया in the descending order of size. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area. सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है. सो आप अंडरलाइन करिए कि 1/3 टोटल एरिया का ये कवर करता है बच्चों. द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट. The combined land mass of Europe and Asia is called the Eurasia, Europe plus Asia. Africa is the second largest continent after Asia. ठीक है, आपको बताया गया ना इस ऑर्डर में इनको रखना है. तो एशिया के बाद अब बारी आती है अफ्रीका की. The equator of 0 degree latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere, and the Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. North America, this is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land, which is called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. Now let's read about South America. This lies mostly in the southern hemisphere. The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world's largest river. क्या नाम है? The Amazon. Very good. Okay, underline कर लीजिए प्लीज क्विकली बच्चों. Antarctica रीड करते. Completely in the southern hemisphere is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. It is located in the South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheet. मोटी मोटी बर्फ की जो शीट्स जैसे परतें होती है ना, उससे ढका रहता है. एंड देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स.
Many countries have research stations in Antarctica, and India also has research, यहाँ पे इंडिया का yes research station there. हमारा भी एक रिसर्च जहाँ पे रिसर्च की जाती है वो स्टेशन हमारा भी एक वहाँ पर है. These are named as Maitri and Bharati. A third has also been recently added. Australia, this is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. ये पूरा एक तो बहुत छोटा है और पूरा ढका हुआ है चारों तरफ से ओशंस के थ्रू एंड सीज के थ्रू. इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. छोटा सा आइलैंड होता है ना जैसे, वैसा ही दिखता है ये. यूरोप, दिस इज मच स्मॉलर देन एशिया. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it and it is bound by water bodies on three sides. Besides continents, there are other land masses also like peninsula, islands and isthmus. A peninsula is a land mass surrounded by water on three sides, for example, Indian Peninsula, Arabian Peninsula, etc. An island is a smaller land mass that a continent surrounded by water on all sides, for example, Greenland, Sri Lanka, Java, etc. And a narrow stretch of land joining two large land masses, continents, which is called isthmus. For example, the Panama Isthmus joining the North and South America, the Suez Isthmus joining Africa and Asia. Did you know, क्या आप जानते हैं इस बारे में, that prior to 1492 AD when Columbus discovered the island of Bahamas and later, Amerigo Vespucci, an Italian explorer, discovered the Americas, named after the explorer. Then known world comprised only three continents, with Asia, Europe and Africa. Africa was called the Dark Continent. Australia was discovered in 1770 AD by James Cook and Antarctica in 1820 AD by Bellingshausen. And hydrosphere, now let's read about this. We know that the earth has a predominance of water on its surface and nearly 71% of the earth's area is covered with water. Yes, ये रेशो आप जानते हैं, 71% जो है पानी धरती पर है और 29% लैंड है, right. The planet appears blue from the space and therefore called the blue planet. जब हम ऊपर से फ़ोटो खींचते हैं ना स्पेस से, तो ये इसका जो पार्ट हमें पानी वाला पार्ट है वो ब्लू दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल वाटर बॉडीज, फॉर एग्जांपल ओशन, सीज, बेज, गल्फ्स, स्ट्रेट्स, लेक्स एक्सेट्रा. एंड now the importance of hydrosphere. The hydrosphere is very important for us in many ways. It plays a major role in the hydrological cycle. Oceans and seas are useful for navigation and trade also. Indented coastlines is favorable for the development of harbor and ports. Oceans provide us food in the form of fish, crabs एंड अदर सी फूड्स. तो हमें इन जो एनिमल क्रिएचर्स होते, जो हमारे सी क्रिएचर्स होते हैं, जैसे हम फ़िश वगैरह यहाँ से जो हमारा सी फूड है हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे ओशन. एंड दे ऑल्सो कंटेन मैनी यूजफुल मिनरल्स इंक्लूडिंग पेट्रोलियम एंड दे हैव बीन rightly termed as the storehouse of future. Oceans are huge water bodies which are interlinked. Oceans form the major part of hydrosphere. They are all interconnected. The ocean's waters are always moving. The three chief movements of ocean's waters are the waves, the tides and the ocean currents. आप देखते हो हमेशा लहरें उठती रहती है, tides like बहुत जैसे आप oceans में हमेशा movement देखेंगे, still कभी नहीं होता है ना. The five major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size. The Pacific Ocean is the largest ocean and it is spread over 1/3 of the earth.
Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape, and Asia, Australia, North and South Americas surround it. इसके चारों तरफ ये इसके लाइक चारों तरफ एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world and it is S-shaped. इसकी शेप, इसका जो लाइक स्ट्रक्चर है वो S की तरह दिखता है. एंड इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. बच्चों साथ साथ अंडरलाइन करते जाइएगा जो जो आपको पता चल रहा है, आप कितना बड़ा है और इसके आसपास क्या है, प्लीज़ अंडरलाइन करते जाइएगा. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented and this irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. The Indian Ocean is the only ocean named after a country. That is India. The shape of ocean is almost triangular. ये ट्राइंगुलर शेप में दिखाई देता है. एंड इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. क्विकली अंडरलाइन. द सदर्न ओशंस एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड्स northward to 60 degree south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. The other water bodies include bay, gulf, inlet, lakes, rivers, etc. A narrow stretch of water joining two oceans is known as strait. For example, Bering Strait joining the Pacific and Arctic Oceans. Thinking short बच्चों, during the Ice Age, do you think the distribution of water was the same as it is now? सोचिए and discuss करिए. Atmosphere is the blanket of gases that surrounds the earth. It extends up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. These layers starting from Earth's surface are called troposphere, the stratosphere, the mesosphere and the thermosphere and the exosphere. Due to a large concentration of gases, dust and water vapor in its lower layers, the air is dense near the Earth's surface and it becomes thinner as we go upward. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना, ये thin होती जाएगी. The atmosphere acts like a shield that protects us from intense radiation from the sun. बेटा अगर ये शीट ना हो ना, बीच में शील्ड ना हो, तो हम लोगों के जो भी हमारी सूरज की किरणें इतनी गर्म है ना, उससे हम जल जाएंगे एकदम. यही हमें प्रोटेक्ट करती है. And atmosphere consists of, now we have this diagram also, different layers of the atmosphere. Atmosphere consists of several gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, ozone, argon, neon, helium and water vapor. The presence of nitrogen, oxygen, carbon dioxide and ozone is responsible in a big way for the survival in life on the earth. Nitrogen is important for the growth of living organism as it is a constituent of proteins. ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स. जैसे आप देखते हो हम ऑक्सीजन से ही सांस ले पाते हैं. लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन हाई एल्टीट्यूड्स क्रिएट्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. आप देखते हो, आप कभी बहुत ऊंची पहाड़ियों पे या बहुत ऊंचा कहीं पे चले जाते हो, तब आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, राइट. सो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. दैट इज़ वाई द माउंटेनियर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑन देयर मिशन. अब वो एक्स्ट्रा सिलेंडर अपनी पीठ पर
लाद कर लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें ऊपर जाते हुए, माउंटेन्स पे चढ़ते हुए उनको ज़रूरत पड़ती है, एस्ट्रोनॉट्स को ज़रूरत पड़ती है सिलेंडर्स की, ताकि वो कृत्रिम अपनी जो सांस है वो ले सके। नेचुरल तो ऑक्सीजन है ही, तो वो सिलेंडर्स के थ्रू भी लेते हैं। ओजोन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्योंकि आपको पता है उससे वो अपना भोजन बनाते हैं। ओजोन एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन एंड थस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंटेंस हीट। Water vapor, though present in the air in small quantities only, and is important for all kinds of life on the earth. The density of the atmosphere varies with height. It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go higher up. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, you know, the climbers experiences problem in breathing due to this decrease in the density of air. बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा ऊपर चढ़ते हुए उन्हें। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। आप भी कभी घूमने जाते हो तो हाई एल्टीट्यूड्स पे जब आप पहुंचोगे तो आपको सांस लेने के लिए कुछ आपको सब्स्टिट्यूट्स भी बताए जाएंगे कि ऐसा करें आप, राइट। Okay, the temperature also decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Please underline this कि air कैसे move करती है, high से low pressure की तरफ। Moving air is known as wind. जो हवा चलती है उसे wind कहा जाता है। Did you know the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen gases, which make up about 99% of clean dry air. Nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases like carbon dioxide, argon, and some more comprise 1% by volume. Oxygen is the breath of life, while nitrogen helps in the growth of living organisms. Carbon dioxide, through present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plant life. Biosphere. Biosphere means the realm of life where all the living beings exist. It is a narrow zone where land, air and water come into contact with each other. The biosphere extends up to 12 km in the atmosphere and about 9 km in the ocean, thus forming a 21 km wide belt. This narrow zone contains all forms of life. The size of organism varies from a minute bacteria to huge whales and elephants. There are about 3 lakh varieties of plants and 1 lakh species of animals in the biosphere. Plants and animals interact with each other. Plants are called the producers, since they produce their own food, and for animals as well. Animals are called consumers क्योंकि वो produce कर रहे हैं plants और वो consume कर रहे हैं. There is a perfect balance in nature between the two groups. The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forest for fulfilling our needs of wood or cleaning land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, our surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land as happened in case of tsunami recently, and parts of Andaman and Nicobar Island were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and river makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. अगर ये सब होगा तो obvious ऐसा तो होगा ही. हम अपनी ज़रूरतों के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं, हम रिवर्स में अगर आप वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, so emissions from industries, their thermal power plants and vehicles pollute the air.
Carbon dioxide CO2 is an important constituent of air, but increase in the amount of carbon dioxide leads to increase in global temperatures. This is termed as global warming. There is thus a need to limit the use of resources in the earth to maintain the balance in nature between the domains of the lithosphere and the atmosphere and the hydrosphere. आई होप बच्चों आपने इसे ध्यान से सुना होगा एंड यू पीपल ऑल्सो हैव अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स. ये मेन पॉइंट्स अगर आपने अंडरलाइन किए हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी एक्सरसाइजेस करने में. आइए एक बार एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट, टिक द करेक्ट आंसर. तो आपके फिर अगेन आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं. इन ऑप्शंस को देखिए और स्टेटमेंट चेक करिए क्या आंसर आपका सूट कर रहा है उसे. फिल इन द ब्लैंक्स. तो आपको ये ब्लैंक्स को चैप्टर के हेल्प से फिल करना है. राइट ट्रू और फॉल्स. कुछ स्टेटमेंट गलत है कुछ सही है. देखिए कौन सी स्टेटमेंट आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग गलत है और कौन सी सही है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ एंड सम आंसर्स क्वेश्चंस यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस इन डिटेल. यानी आपको ब्रीफ क्वेश्चंस के आंसर आपको 3-4 लाइन्स में देने हैं और डिटेल्ड के आंसर आपको कैसे करना है, एक्सप्लेन करने हैं. राइट. और सभी आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिखें. स्किल्स एनरिचमेंट जोन, क्विक रिस्पॉन्स बच्चों. सो आप इस ग्रिड को कंप्लीट करें. सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल. ओके. मैप वर्क इन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड. शो द फॉलोइंग. आपको ये सब दिखाना है. मेजर प्लाटोज, मेजर माउंटेन रेंजेस एंड मेजर प्लेन्स. आउट ऑफ द बॉक्स. Do you think cloud should be considered a part of the hydrosphere and or the atmosphere? Give reasons for your answer. Why is it important for the mountaineers to carry oxygen cylinders with them while scaling a peak? सोचिए इस बारे में and have fun. Enjoy.